Hello students, in previous video we have started brain teasers of unit 11 and we have already done question number 1, that is multiple choice questions. And now today we will start with question number 2. So question number 2 is fill in the blanks. A part is in 9 out of 10, that is 9 upon 10. 9 is called the. So you can see here that 9 is the upper number. 9 is the upper number of the fraction. And what we call the upper number? Upper number को हम कहते हैं numerator. So 9 is called the numerator. Right? And in 5 upon 6, 6 is called the. So you can see here in this fraction, 6 is the lower number. And lower number is called the denominator. So 6 is called the denominator. Right? So we have already learned that upper number को हम बोलते हैं numerator and lower number को हम बोलते हैं denominator. Now C part. Fraction having same denominators are called dash fractions. So we have learned that fractions जिनके denominators कैसे होंगे? Same होंगे. Such type of fractions are called like fractions. Like fractions. And we have learned how to add and subtract the like fractions. Right? And next question is write the fractions in words. So we have learned in the unit that how to write the fractions in words. कैसे लिखते हैं हम words में fractions को? So if we want to write 1 out of 3 in words, so how can we write? जो numerator होता है उसको हम जैसे read कर रहे हैं 1, so we will write as it is. एंड डिनोमिनेटर को हम ऑर्डिनल नंबर फॉर्म में लिखते हैं. जैसे हम ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, राइट, वो हम डिनोमिनेटर्स को लिखते हैं. सो हाउ कैन वी राइट दिस इन वर्ड्स? इट इज 1/3. 1/3. Similarly, we will read it as 1/9. 1/9. 3/4. 3/4. 1/8. 5/6. 2/3. So let us write these fraction in words. So here is question number 3 of brain teasers. That is, write the fractions in words. A part is 1 out of 3 or 1 upon 3. So how can we write this in words? 1 we will write it as 1 डैश लगाएंगे और जो डिनोमिनेटर लिखते हैं हम ऑर्डिनल फॉर्म में, दैट इज थर्ड. 1/3. Now B 1 upon 9. So how can we write it in word? That is 1 and denominator को 9ths. 1/9. Right? Similarly C part 3/4. So how can we write it? 3 जो न्यूमरेटर होता है उसको एज इट इज 3 एंड इसको लिखेंगे हम 4ths. 3/4. Similarly 1/8. So how can we write it? Write it as 1. 8 को हम क्या लिखेंगे? 8ths. 1/8. तो ये आपको स्पेलिंग्स जो हैं वो लर्न होनी चाहिए.
Next is E part, that is 5/6. So how can we write it in words? So that is 5 and 6 को हम क्या लिखेंगे ऑर्डिनल फॉर्म में? सिक्स्थ्स. 5 sixths. And F part, that is 2/3. So we'll write it as 2/3. 2/3. So in this way we can write these given fractions in words. And now the next question, that is write fractions for the following. So here the fractions are given in words. हमें words में given है and we have to write in numbers, fraction form. So it is 5/6. जो फर्स्ट होता है वो हमारा न्यूमरेटर होता है, सेकेंड नंबर पे लिखा है दैट इज डिनोमिनेटर. सो इट इज 5/7. 5/7. So how can we write this? This is 5/7, right? Next is 2/10. 2 is the numerator and denominator is tenths. 5/8. 5 is numerator and 8 is denominator. 4/9. So 4 is numerator and 9 is denominator. 3/7. 3 numerator and 7 is denominator. And 4/5. So 4 is numerator and 5th is the denominator, right? So in this way we can write the fractions in yes, for the following. So here words में जो है given, इनको हम fractions में लिख सकते. Next question is complete the table given below. So here what is in the column? Fractions. फर्स्ट में है हमारा, फर्स्ट कॉलम में है fractions, सेकंड में divide into equal parts. And how many parts, the equal parts it is divided, that we have to write here. That is total number of equal parts. Then number of shaded parts, here numerator and then denominator. So let us complete this table. The fraction is 3/7. 3/7, or you can say 3/7. Divided into equal parts, that means total number of parts. 3/7 में total number of parts कितने हैं? Total number of parts हमेशा हमारे कहाँ लिखे होते हैं? In denominator. So divided into equal parts is 7. Total number of parts are 7. Number of shaded parts. So number of shaded parts हमारे कहाँ लिखे होते हैं? In the numerator. That means ऊपर लिखे होते हैं shaded parts. So there are 3 shaded parts. Now numerator, you know what is numerator? Numerator is the upper number of the fraction. Numerator is the upper number of the fraction. So what is numerator here? That is 3. That is 3. And denominator, what is denominator? Denominator is the lower number, that is 7. So in this way you have to fill this table. Next is same, 2/9. Total number of parts are 9. Number of shaded parts are 2. Numerator is 2 and denominator is 9. 9C part, here the fraction is not given. Fraction is not given. What we have to do? Here divided into equal parts, total number of parts are also not given. Number of shaded parts are also not given. What is given is numerator and denominator. हमें क्या दिया हुआ है? Numerator and denominator. First of all, we will write the fraction. So very easily we can write the fraction when the numerator and the denominators are
given. So what is numerator? The upper number, so that is 4, and denominator is the lower number, that is 10. So 4 upon 10 is the fraction, and then next is divided into equal parts. So total number of parts are 10 and number of shaded parts are 4, right? Now D part, again fraction is not given. Divided into equal parts are given, number of shaded parts are not given, numerator is given and denominator is also not given. So divided into equal parts, that means total number of parts. हम कहाँ लिखते हैं total number of parts? In the denominator. नीचे लिखते हैं हम total number, that is equal parts. Number of equal parts हम कहाँ लिखते हैं? नीचे denominator की place में. So ये हम क्या है denominator की place में लिख देते हैं 9, right? And you know जो ऊपर होता है वो number of shaded parts, that is not given. But here the numerator is given. Numerator क्या होता है? Upper number. So upper number is given, that is 7. So numerator is the number of shaded parts. So number of shaded parts are 7. And then fraction is given 1 upon 6. So you can easily fill this also in the same way जैसे हमारा first A part हुआ था. Now next is draw figures in your notebook to represent the following fraction. This you can easily do it. ये हमने पहले भी किए हैं. नीचे total number of parts. So आप इसको किसी भी शेप में आप ड्रॉ कर सकते हैं, that is up to you. Either आप स्क्वायर्स बनाते चलिए या फिर आप सर्कल बना के इसको टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कर सकते हैं. लाइक 1/2. सो 1/2 के लिए मैं सर्कल भी ड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके 2 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स ड्रॉ कर सकता हूँ. सो हाफ कर देंगे तो टोटल 2 इक्वल पार्ट्स. एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? दैट इज 1. सो आई विल शेड 1 part out of 2, right? This you can do in your notebook. Similarly 1/6. अब मेरे पास ज़्यादा parts हो जाते हैं. So what is the best way? So best way is make the squares, right? So हम squares बना लें अगर, so इस shape में हम ज़्यादा जो हमारे parts होते हैं हम easily बना सकते हैं. Equal number of parts. So we can easily make the 6 parts 1 2 3 4 5 6. So आप जब भी आपको ज़्यादा parts draw करने हैं तो आप इस way में draw करें. So it will be easier for you. And 6 equal parts are there and you have to shade 1 out of 6. So you can shade any one. So you know how to shade. Now 7 पार्ट्स. सो 7 पार्ट्स के लिए हम क्या करेंगे? इसी तरह से हम क्या करेंगे, पहले हम 6 पार्ट्स ड्रॉ कर लेते हैं, राइट, लाइक दिस 6 पार्ट्स. एंड 7 के लिए हम 1 मोर पार्ट यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं. सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ. सो मैंने आपको जब बताया है कि जब भी आप ज़्यादा पार्ट्स ड्रॉ करने हैं, दिस इज द बेस्ट वे. आप उतने ही स्क्वायर्स आप ड्रॉ कर लीजिए, चाहे आप एक लाइन में कर लीजिए, चाहे इस तरह से कर लीजिए, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं. बट आपने जो साइज होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए. 7 पार्ट्स आर देयर एंड यू हैव टू शेड 2. सो यू कैन शेड एनी 2 पार्ट्स, दैट इज अप टू you. 1 part and 2 part. Similarly you can do this. Next is solve the following questions. So here you have to solve add and subtract. So you can do it yourself. I will do the last 8th question. You are given the fraction 3/5. Add 2 to the numerator and 3 to denominator. अब क्या करना है? 2 हमें न्यूमरेटर में ऐड करना है एंड 3 हमें डिनोमिनेटर में ऐड करना है. व्हाट विल बी द न्यू फ्रैक्शन? वेरी इजी क्वेश्चन. सो फ्रैक्शन क्या दिया गिवन है हमको? 3/5. सो 3/5 अगर मैं ए पार्ट यहीं पर करूं, सो 3/5. सो लेट अस डू इट इन द नोटबुक. सो 3/5 क्वेश्चन नंबर 8th.
you are given a fraction that is 3/5, right? ए पार्ट हम करेंगे. सो ए पार्ट बोलता है हमारा add 2 to numerator and 3 to denominator. So 3/5 is the given fraction. Add 2 to numerator. What is numerator here? 3. 3 में हम क्या ऐड कर देंगे? 2. And 3 हमें किस में ऐड करना है? डिनोमिनेटर में. Now what will be the fraction? 3 plus 2 is 5 and 5 plus 3 is 8. 5/8 is the new fraction, right? Similarly, B part. So what is the B part here? Multiply numerator by 4. अब हम न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? गिवन फ्रैक्शन इज अगेन 3/5, राइट? अब हमें क्या बोले? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर बाय 4. न्यूमरेटर इज द अपर नंबर, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से. एंड एड 10 टू द डिनोमिनेटर. 10 क्या करना है? ऐड करना है. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली. ऐड करेंगे हम 10 किस में? डिनोमिनेटर में. What will be the new fraction? So solve it. So it is 3 multiplied by 4. 3 4s are 12 and 5 plus 10 is 15. So this is the new fraction. So we have completed this unit 11. So in next video we will start the next unit, that is unit 12, geometry. Thank you.